गोधरा घटना की हकीकत, अफवाह और सच्चाई। आदाब, मुस्लिम ऑफ गुजरात ये यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कुछ दिन पहले गोधरा शहर में एक घटना हुई जिसके कारण पूरे शहर में तनाव फैल गया। सोशल मीडिया पर कुछ वीडियो वायरल हुए जिनमें एक युवक आई लव मोहम्मद का छोटा सा साइज प्रिंट लेकर सड़क पर दिखाई दे रहा था। ये युवक गोधरा का ही रहने वाला है और उसने पावागढ़ रोड, बस स्टैंड सहित कई जगह डांस के वीडियो अपलोड किए थे। इसके बाद गोधरा बी डिवीजन पुलिस ने उसे थाने बुलाकर समझाया कि नवरात्रि का त्योहार नज़दीक है और इस दौरान रास्ते में डांस करते वीडियो अपलोड करना सही नहीं है। पुलिस ने यह भी कहा कि पहले भी यह युवक पब्लिक प्लेस पर ट्रैफिक रोककर डांस करता पाया गया था और उसे चेतावनी दी गई थी। सोशल मीडिया पर यह अफवाह फैलाई गई कि पुलिस ने उसे आई लव मोहम्मद लिखे कागज़ के कारण मारा पीटा, लेकिन पुलिस ने साफ किया कि यह पूरी तरह से झूठ है। असल में पुलिस ने उसे सिर्फ समझाया था और चाय पानी कराकर वापस भेज दिया। पुलिस थाने के कैमरों में ये सब रिकॉर्ड भी हुआ है। मुस्लिम समाज की ओर से भी इस घटना पर गहरी नाराजगी जताई गई है। समाज के लोगों का कहना है कि यह युवक, जिसका नाम जाकिर झाबा बताया जा रहा है, बार बार ऐसी हरकतें कर खुद को फेमस करने की कोशिश करता है और पुलिस से झूठे वादे कर मनमानी करता है। इस बार भी उसने अफवाह फैलाकर युवाओं को गुमराह किया, जिससे शहर का माहौल बिगड़ा। मुस्लिम समाज ने कहा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नफरत का जवाब नफरत से नहीं दिया। ताइफ में जब उन पर पत्थर बरसाए गए तब भी उन्होंने बदले में बद्दुआ नहीं दी, बल्कि रहमत और दुआ दी। ऐसे में उनके नाम पर शहर में अशांति फैलाना और अफवाहें फैलाकर निर्दोष युवाओं को गुमराह करना सरासर गलत है। गोधरा मुस्लिम समाज का स्पष्ट कहना है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत जाहिर करने का सही तरीका यह नहीं है कि झूठी अफवाह फैलाई जाए और समाज में तनाव फैलाया जाए। यह एक शर्मनाक घटना है जिसने शांति और सद्भाव को आहत किया है। गोधरा के एसपी हरेश दुधत साहब का बयान। एसपी हरेश दुधत साहब ने इस पूरे मामले पर कहा कि पुलिस ने युवक को केवल समझाया था, मारपीट जैसी कोई घटना नहीं हुई। सोशल मीडिया पर फैलाई गई अफवाहें पूरी तरह से निराधार हैं। उन्होंने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। शुक्रवारे अमारे त्यां एक कालोल पोलीस स्टेशन में एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसरे एक विडियो मूकेलो। ए विडियो में एने बे कौम वच्चे वैमनस्य फैलाय एवा प्रकारनो विडियो मूकेलो, जेथी अमे तात्कालिक एने रात्रे हस्तगत करी एनी विडियोनी पोस्ट डिलीट करी, एनो सोशल मीडिया एकाउंट छे ए डिलीट करवा माटेनी पण कार्यवाही करी अने गईकाले एना विरुद्धमां कालोल पोलीस स्टेशनमां गुनो पण दाखल करेलो छे। आवा ज प्रकारनी मानसिकतावाळो एक शख्स जे छे ए बी डिविजन पोलीस स्टेशन विस्तारमां रहे छे। भूतकाळमां एना विरुद्धमां 2 वखत गुना पण दाखल थई चूकेला छे। एटले ए पण आ नवरात्रिनो तहेवार आवतो होय, बधा तहेवारोनी मोसम शरू थती होय, कोईपण प्रकारनी ए आवी पोस्ट मूकी अने बे समाजमां वैमनस्य न फैलाय तेवो कोईपण प्रकारनी कार्यवाही न करे એટલા માટે અમારા પીઆઈ શ્રીએ એને સમજાવવા માટે બોલાવેલો હતો અને એણે બહાર જઈને થોડુંક એવું ગેરસમજ લોકોને ફેલાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો કે મેં આઈ લવ મોહમ્મદ એવું પોસ્ટર મૂકેલું છે એટલા માટે પોલીસે મને ધમકી મારેલી છે, પણ ખરેખરી હકીકત આઈ લવ મોહમ્મદનો પોસ્ટરનો કોઈ વિવાદ જ નથી। ફક્ત ને ફક્ત નવરાત્રિના મહોત્સવ અન્વયે એ કોઈપણ પ્રકારની બે સમાજમાં ગેરસમજ ન ફેલાય એના માટે કોઈપણ પ્રકારની પોસ્ટ ન કરે એટલે એને ખાલી સમજાવવા માટે અહીંયા બોલાવવામાં આવેલો હતો અને એણે જે ગેરસમજ ઊભી કરી એના માટે ટોળો અહીંયા આવેલો હતો અને પછી પોલીસે ડિસ્પર્સ કરેલું લાઠીચાર્જના અંતે એ લોકોના વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરવામાં આવેલો છે। ટોટલ 17 જેટલા આરોપીઓને અમે અત્યારે હસ્તગત કરી લીધેલા છે અને અમારી અલગ અલગ 10 ટીમો બની અને એની કાર્યવાહી બાકીના આરોપી પકડવાની કાર્યવાહી ચાલુ છે। અને અમારા જે ગોધરામાં જે જિલ્લામાં દરેક જગ્યાએ અમારું પેટ્રોલિંગ ચાલુ છે। કાયદો વ્યવસ્થાની પરિસ્થિતિ એકદમ સામાન્ય છે। સવારના 8 વાગ્યાથી દુકાનો જે રીતે રાબેતા મુજબ ચાલુ થાય છે એ રીતે રાબેતા મુજબ ચાલુ થઈ ગયેલી છે, એટલે આ અફવાથી કોઈએ ગેરસમજ ફેલાવવાની જરૂર નથી। આઈ લવ મોહમ્મદ છે એ પોસ્ટરનો કોઈ વિવાદ જ નથી। ફક્ત ને ફક્ત બે સમાજની વચ્ચે કોઈપણ પ્રકારની નવરાત્રિમાં જે દીકરીઓ કે માતાઓ વિશે કોઈ અણછાજતું કોઈ એવી પોસ્ટ ન મૂકે એના માટે જ એને સમજાવવા માટે અહીં બોલાવેલો હતો। જે કાલોલમાં જે ગુનો દાખલ થયેલો છે એનો વિડીયો તો મેં તાત્કાલિક ત્યારે જ ડિલીટ કરાવી દીધેલો હતો અને હાલમાં તો આ વ્યક્તિ કોઈ વિડીયો ન મૂકે એના માટે એને સમજાવવા માટે બોલાવવામાં આવેલો હતો। અમારી સોશિયલ મીડિયાની ટીમ ચાલુ બનાવેલી જ છે। દરેક પોલીસ સ્ટેશનના માણસો અમારા જે છે સોશિયલ મીડિયા પર તાત્કાલિક એનું ધ્યાન જતું જ હોય છે અને આવી કોઈપણ પ્રકારની પોસ્ટ આવે તો તાત્કાલિક એવું અમારું ધ્યાન દોરતા જ હોય છે। એ લોકોના ધ્યાન દોરવાના કારણે જ અમે જે ગઈકાલે એક કાલોલમાં ગુનો પણ દાખલ કરાવેલો અને સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ મૂક્યાના લગભગ ગણતરીના કલાકોમાં અમે એને પકડી લીધેલો અને એની સોશિયલ મીડિયા પોસ્ટ પણ ડિલીટ કરાવી દીધેલી। ગઈકાલે જ એને અટક કરી લેવામાં આવેલો છે એના વિરુદ્ધમાં ગુનો દાખલ કરીને। अगर आपको दिलचस्प और जानकारीपूर्ण वीडियो पसंद हैं तो हमारे YouTube चैनल मुस्लिम ऑफ गुजरात को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारा संदेश दूर दूर तक पहुँचे।
आपका सपोर्ट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। शुक्रिया।